लाइबिलिटी है ना, मतलब कराटे मारने का है या कराटे सीखने का है? Are we good to study? यार आप लोग ऐसे भी बेसिकली मेरे से पढ़ना नहीं है आज, पढ़ना है कि नहीं? चलो जाने दो, पहला 5 मिनट हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो किधर है तेरा अशोक राय कंपनी? क्यों भेजा तूने उसको? तेरे लिए सूटकेस में जगह नहीं था? Hey, listen, we have started with chapter number 1. Yes. Initially, I'll be going a little bit slow, but then you have to pick up my speed. Why? I'm going at Rajdhani and you're coming at Express. क्या? उस दिन यहाँ से किधर गया? किधर गया? क्यों? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे यार तू ऐसा बिलक बिलक के बोलेगा तो मुझे डाउट आएगा। क्या चलता क्या है? क्यों? तेरा घर है क्या? मैं भी सही नहीं, मतलब मैं पाम बीच में रहता हूँ ना, उधर पाम है ना बीच है, बट फिर भी उसका नाम पाम बीच रखा है, ठीक है? हाँ, सेक्टर 15 है। Hey guys, now then what I'll do, I'll quickly start summarizing the chapter. You know what is the summarizing? Every year I do this with my dear students. मतलब the entire chapter I'll put it in blocks like this. Are you getting? Are you getting that in not? So the first major block will be here. Heading. Subheading कैसे लिखेगा? Clear? ये आप लोग मैनेजमेंट स्टूडेंट को सिखाते हैं, वो तो नहीं यार, मैं अभी तक तो 9th की क्लास नहीं हुआ, है ना? And then I'll pull you, not pull you, pull the topics. One लिखा, उसका जो हेडिंग उधर है, फिर उसका A पार्ट. Easy to learn? हाँ, और भी एक डिवीजन आता है. इसके बाद फिर हम लोग मैनेजमेंट को ऐसे सिखाते हैं. Sorry, है ना? फिर एक और एक कॉलम ये लिखा 1 पार्ट 2 पार्ट, है ना? 3 पार्ट. सर इसके आगे मत जाओ, इसके आगे भी हम जा सकते हैं, टेंशन में सर सिखाने हैं क्या पता करना होगा सर, है ना? 1 का ये क्या है? 1 का सेकंड थर्ड वन, फिर और भी आगे जा सकते हैं. बस दूसरा लगा और आगे जा. आपका पहला 2 चैप्टर इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, बट व्हाट इज द बैड थिंग अबाउट डायग्राम्स, है ना? अभी जो लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड, एक्चुअली वो चैप्टर का नाम ही द ग्रिड है. यू नो व्हाट इज द ग्रिड? अभी जैसे आई डोंट हैव अ ग्लोब, कैसा है? अच्छा वो आएगा. We will have a globe or we'll have a map where I have to show you the longitude and the latitude. It's like I'm reading the news for deaf and dumb. You know what is deaf and dumb news? एक कोने में टीवी का स्क्रीन में एक मैडम पढ़ती है और सामने एक मैडम बैठी रहती है. खत्म कर दीजिए. So the grids and latitudes you have to learn, है ना? How about the chapter 1? Chapter 1. We have done the proofs we have done. What is the next heading? What is the next heading? Shape of the earth. Did I say it is spherical? It's globe. So be very simple that you are bringing pencils, and most important along with pencils, sharpener, eraser, है ना? तो अभी हम लोग शेप ऑफ द अर्थ में मैं 3 या 4 लाइन दूंगा, उसके बाद हम लोग प्रॉपर ग्लोब बनाएंगे. क्यों प्रॉपर? क्योंकि किसी ने स्क्वायर बनाया, किसी ने हेक्सागन बनाया, ऐसा नहीं चलेगा. ओके, सो पुट द हेडिंग इन योर नोटबुक, शेप ऑफ द अर्थ. And give me one Morning Star book. Yeah, you guys have got the volume now at present. मिला? लोगों भी से मिला? Good, too good यार. तो अभी से next week से only the volume, हाँ?
हाँ ये मुझे एक्सप्लेन करने का. In your school did they explain this word? How do they pronounce this word? Where it is? Oblate spheroid. Oblate spheroid. It is not even spherical in a proper shape. Okay. North and south pole are tapering. You know what I mean by tapering? Whereas at the mid of the earth it is bulging. What is bulging? किसी में बोला ट्रैफिक पुलिस का पेट. हाँ बना रही है bulging. है ना? और उसका सर इतू सा है सर. इतू सा सर है उसका. और पैर भी इतू सा. बट पेट है ना सर इतना मोटा है. तो हमारा अर्थ वैसे ही है. सॉरी मैं ऐसा कॉमेडी में बोल रहा हूँ. ये सब जगह एग्जाम्पल स्कूल में मत लिख लो. So it is bulging at the center and tapering at the north and south pole. Oh my dear black belt. बोल जरा. Sorry, I forgot your name. What's your name? क्या? कल्प्रित. Yes, कल्प्रित बोलिए. यार जरा कराटे चैंपियन है यार. जरा डाल जरा मतलब आवाज. Come on, everyone, repeat. How is the shape of the earth? It is oblate spheroid. What does it mean? Tapering at the north and south pole. In the middle, it is bulging. Correct? So, the first sentence where you go. Earth is said to be. Title कौन लिखेगा मैं? Shape of the earth. You guys don't take me seriously at all. दूसरा पेन ले ले. ले ले. आधा लिख रहा और आधा गायब. सर 80% चलता है. Give him one pen, please. यार लड़कियों से कुछ ले ले सामान लिखने का. Hey, why did he? अच्छा उसका होम टाउन है. When is going to come back? ले ले. She's good. Tomorrow. है? ये कौन सा गाँव है? मतलब कल गया और आज आया. वो गाँव है. मतलब नेहरू गाँव छोड़ के बेलापुर गाँव गया. Where is he? Where is his home town? वो तो मैं रोज जाके आता हूँ. मैं भी सोच रहा यार भाई कब गया. चलो right now. Earth is said to be spherical in shape. Earth is said to be spherical in shape, but ये हम लोग मैथ्स में सिखाते हैं. Spherical in shape, but not a perfect square. Perfect sphere. But not a perfect sphere. Now you guys can stop. And then who can prove me? Yes sir, जो आपने लिखा है वो wrong है, मतलब right है. Come on. Is it a perfect sphere है या नहीं है? नहीं है? क्यों भाई? आपने बोला ये तो इतना बटर लाया है आज मुझे. डब्बा है. सरफेस मतलब इवनली स्प्रेड आउट नहीं है माउंटेन. चलो भाई साहब ने बोला. I understood. Anything else? Mountains अच्छा है ना. ये बोले मेरे से चढ़ने नहीं होता. माउंटेन्स नीचे. भाई साहब आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है जैसा है चलेगा. I don't have any problem. अरे बोल. हाँ yes my dear. Bulging mirror. Middle. Why middle? Why not under the head? ठीक है. You. दोस्त ने तो मेरा बैठा सर वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंटर पे जो मास हो ज्यादा फोकस हो जाता है. Oh my dear. How is he explain like a juggernaut? अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी है. नहीं सर बट सेंटर में ज्यादा कंसंट्रेटेड है. तो पेट बाहर निकल. देखो whatever you are saying is absolutely right and whatever I am going to be saying also sometime right and always right. है ना? क्योंकि मैं कल ही पढ़ा ये चैप्टर. So when I use the word perfect, I might have shown you the earth shape like this. Correct? थोड़ा सा बीच में होगा. पढ़िए. But is it exactly like this? No. It might be. अभी हम लोग ऐसा बनाते हैं earth को. And children laugh at me. ये कौन सा earth है? है ना? Let us give a new shape. Sir, you are making a comedy. ये तो शटल है सर जो जिसमें हम लोग 6 महीना ऊपर बैठ के नीचे उतरा. चलो फिर ऐसा करते हैं. सॉरी ये सब बोलना नहीं बनाने का. ये नहीं है ना.
So when you say the word sphere, then we will be applying the formula. What is that? Pi r square है क्या? Circumference है क्या? रहने दो वो सब प्लस के इधर आया है ना? Perimeter and thermometer वो है बाद में use करेंगे. रुको टेंशन मत. So when I am applying mathematical formula, definitely I am going to find out the circumference. Circumference का मतलब क्या है? ये formula ही बोलती है. So exactly is not same, okay, but it is very closer. I always believe the Earth and the moon are closely related. Do you accept? Yes, sir. It's like Earth and moon are like very close brother. बड़ा ब्रदर तो रखती है, छोटा ब्रदर घूमता रहता है. सर डायरेक्टली बोलो ना, वो उसका सैटेलाइट है ना. सैटेलाइट का मतलब क्या है? सर इसरो से एक उड़ता है सर. एंड लोग काउंटिंग ओनली 10 से क्यों करते हैं? वो भी उल्टा गड़बड़ है इनका, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है. You know, actual counting of any rocket starts from 10. हाँ 100. अच्छा मैं तो 10 से लेकर 90 कब गिनते 3 दिन पहले. And for every count they need to say count, check, clear. ये सब आप क्यों बोल रहे हैं? And even one person say not clear, landing take off done. कल जाएंगे बड़ा पाव देखे, चलो निकलो. हाँ सच है. Every stage they check it. If they don't say okay ready, cruising रॉकेट बोलेगा नहीं यार. ये तो बनना है स्पेस साइंटिस्ट. हाँ बाबा बहुत सारा है. You want to see the movie? I'll show you. There are many good English movies related to rocket taking off. सर देखा था मैंने. And कभी-कभी तो take off का महीना चलता रहता है. 3 महीने तक take off ही हो रहा है. रॉकेट बोलेगा बहुत सावधान से यार जल्दी करो. सर मून लैंडिंग तो 6 महीना लगा. हाँ, it's like as good as a rocket and a what do you call it? Aeroplane having a chat with each other. ये लोग भी chat करते हैं. सर किसमें स्नैपचैट में और सब दोनों अपना रेस्ट हाउस में बैठा रहता है. रॉकेट और एरोप्लेन. और एरोप्लेन हमेशा बहुत तारीफ करता है. यार क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है, मुझे क्या जिंदगी है. टूट जाता है बीच में. नहीं सुन तो सही इसके पहले. And the rocket is saying that when you take off now you spears everything and you are going bang. और मैं देख बेचारा इसे है ना, कभी टेक ऑफ करने बोलता है, कभी लैंडिंग करने बोलता है, कभी ऊपर ही बोलता है कि और 4 मार चक्कर एयरपोर्ट में जगह नहीं तेरी. हम बाजू में किधर गली में देखो कर दिया. नहीं होता ऐसा. टेक्स टाइम. You know what does the rocket gives the answer to the airplane? अभी आप लोग सब लोग रॉकेट है, बोलो क्या आंसर देगा? I'm the airplane. हाँ ये इसको मान लो. हाँ बोलो. मुझे एक टाइम यूज करके भुला देते हैं. अरे वाह, ये भी आंसर था क्या? बच्चों का आंसर ये नहीं है. और तो चलेगा. रॉकेट बोलते तेरा पिछोड़ा में आग लगेगा ना, मालूम पड़ेगा. क्योंकि रॉकेट का आग कहाँ से लगा था? नीचे से. और हमारा एरोप्लेन कैसा है? ऐसे सर उसके कितने का प्रोपेलर बेचारा स्लोली स्टार्ट होता है. And how many of you know this wings for airplane is for what? सर एरोडायनामिक्स. अच्छा she said that. सर एरोडायनामिक्स. Thermodynamics होता है. Aerodynamics. Come on. सर एयर रेजिस्टेंस. एरोडायनामिक्स प्लस लेस बैलेंस. I'm very bad at this. सर वो एयर रेजिस्टेंस को नाम पता नहीं. No, sometimes I have told to the airplane बहुत जगह लेता fold करके उड़. Will it take off? No. I can show you through a paper. When I blow the air in this part, the air is becoming vacuum. अब एक काम करो, दिखाई दो. एक छोटा सा पेपर में, don't tear it fair book. Anybody using a rough notebook? नहीं है सर. I'll show you. The physics teacher of my school explains in a very good way. एक का बच्चा बोल देते हैं. एक का मान लीजिए. This is all you should understand. Why does the airplane or rocket और हमारा अर्थ में कौन सा स्फीयर में क्या क्या है वो भी बताते हैं. My physics teacher made me to explain to the children in a very simple way. Okay, good. So let's see. I'm holding this piece of paper like this, है ना? And observe very carefully. When I'm blowing this air will become vacuum, and this part will slowly lift up. Let's see. मतलब क्या है? These wings try to move the, समझ गया? पानी में नहीं.
And then the body of the aeroplane is made out of what? Aluminium. He's right. Somebody in 10th told me, sir, steel. फिर जिंदगी भर उड़ेगा नहीं. Iron. फिर तो कभी नहीं उठेगा हवा में. It's a special kind of aluminium which is called as duralumin. High quality but very duralumin. कल मैंने बोला. And then and then this is how we are going to explain the earth. There are two forces that he has explained. One is the centrifugal. Another is centripetal. देखिए मेरा हाथ का movement से समझ में आता है. Centrifugal means it attracts all the object towards the center. That is why you and me are not falling, but the earth is rotating at a very fast pace. एक घंटे में 1680 square kilometers per hour का speed में घूमता है. But when you rotate a pen very fast, वो doll ऐसा लगेगा doll वैसे का वैसे ही है. So the circle is rotating very fast. Centripetal जो center part है उससे कुछ forces repel भी करता है. So why the rocket has to pierce out of the earth very quick? सर वो जल्दी में है उसको छोड़ो सर. Yes, it has the gravitational pull. Many a times rocket has been pulled down. किधर को जा रहा है? चले But it has to defeat the force. I always feel you guys are all rocket. हम कितना भी force करें आप सीधा क्लास में विंडो तोड़ के सब निकल जाएगा. और फिर इधर बंद कर दिया उधर बंद कर दिया और अटेंडेंस भी कंपलसरी है. फिर आपको जाने का मन करेगा 1 घंटा ही. So we always believe we have this rotation of the earth. How much time? 16,000 Very good. What is the one rotation takes how much hours? And one revolution? One revolution 65 days. Sure. 0.25. 0.6. अच्छा ठीक है. वो मैं बाद में calculation करता हूँ. What is that 366 days? Leap year. When it is? So Every 4 years. Where is this one day come extra? 29. So every year. Every year we have 6 6 hours extra. extra. 4 into 6 is 24. तो 4 साल के बाद जब आपका कैलेंडर में which month will have 29 days? Feb will have 29 days. That is called as which year? And somebody asked me, sir, why do we celebrate April Fool? You don't know? उसका पीछे रीजन है. ऐसे नहीं बनाते हम लोग. You know which calendar we are following? एक लड़की बोला काला निर्णय. G26. हम समझ रहे. No, we are following a British calendar. Initially it was a Macedonian calendar or Iranian calendar. And उस टाइम पर उन लोग ने April 1 को New Year मान के चला. हाँ, that was true. And after few centuries, the British ने बोला no. Year starts with Jan 1st. But ये Iranian, Allah, माशाअल्लाह, we will follow April 1st only. हाँ, तो फिर ये ब्रिटिश लोग ने उनके ऊपर मजाक उड़ाया है. अरे ये अप्रैल फूल है अभी भी. हाँ, हमारा अप्रैल फूल को सर टीचर का नाम सर पे ना पीछे से. So this is the real story. So British first time to celebrate. That is what they got a calendar. अभी Indian calendar बोलेगा तो अब और भी ऐसेगा. You know Indian calendar में which year we are rotating? We are in 2052 and it is called as Vikramad Samvat. ये कुछ संस्कृत वर्ड है मेरे मुंह में घुसता नहीं. And it is that King Vikramaditya. देख मैं उसका पेपर बचत करने के लिए कितने वो भाई साहब पूरा रॉकेट ही बचत करेगा. आप कौन लगा? मैं लगा. चलेगा. किधर किसके पीछे लगा? इधर ही लगा. He's very careful. So whenever we are explaining the shape of the earth, it is a oblate spheroid. So why does oblate? That also say because it is not an omelette. ये पार्ट है कि bulging है. हाँ सर बहुत बड़ा bulging है. And whereas this part, if you see this part, it is tapering. You know what is tapering? छोटा. हाँ पतला होगा. So it is oblate. And why it is spheroid? Because it is not a perfect sphere. अभी समझ में आ रहा है? So we have two forces. One is centrifugal, and other is Centripetal. petal. Yeah, your English is better than mine. Huh? This is the force. बोलो petal.
Centripetal. Petal. And petal is also right. And फिर rocket और airplane का story में हमको क्या समझा? It is the gravity, and then we have this air resistance. Atmospheric pressure also. Anybody understand what is this pressure? The vertical force which acts on 1 cubic centimeter of every object. अभी आपके ऊपर और मेरे ऊपर कितना प्रेशर लगा है वो मालूम नहीं. मम्मी पापा का बहुत घर से बाहर आए टीचर का प्रेशर है ना. फिर बच्चा को तो टेक्स्ट बुक. हमारा बच्चा पूरा प्रेशर तोड़ के निकल जाता है जैसे ये बात कहता है ना. और उधर से क्या मैं आस्किंग आई हैव नेवर वांट टू करते यार. मुझे ऐसा लगता है कि पैसे देता हूं मैं और वो मुझे कंटिन्यूअसली मेरे पेट में मारता रहता है. चलो समझ में आया? Absolutely clear. So it is the which word we were explaining? Oblate spheroid. Correct. Means it is not a perfect sphere. Chalo, second point. Its diameter. Diameter अभी radius अब आएगा. At the equator is 12576. The telephone number कितना याद करो? There is no other choice. Hey, 756. 12756 kms. What is kms? Its diameter is 12,756 kilometers. And its polar diameter is 12,174 714 kilometers. ये आके poles में उसका diameter. Now you guys might be get confused. देख लो अभी. I'll show you. मैं purposely भी अंडा को इधर-उधर घुमा रहा हूँ है ना. So which is the central one? ये रहेगा. अभी shape. So which is the polar one? ये रहेगा. Are you understand? So this is the NP type. Sorry, this is the SP. And this is NP. And when you show the axis, it is tilted or straight. Tilted. How much degree from the origin? ऐसा रहता है. इधर बनेगा 23.5 degree या 23 degree. इधर भी 23. ये origin है, straight है, but दोनों sides से tilted है. So that is why when the Earth rotation and revolution takes place, we have cycle of seasons. How many seasons? 4. In India, do we have? India 3. हाँ 4 भी है. अभी मैंने उनको climate में season सीखा क्या है. Next point. हाँ ठीक है यार. जब भी आएगा गिन लेंगे. 3 1 4 है. Due to this difference, I'll think about it. Due to this difference in diameter, the Earth's. Hey, right? What are you doing? सामने इधर. The Earth's rotation in the center is maximum. The Earth's rotation in the center. Idhar aa. I need to see a notebook. Earth's rotation. In the center is its maximum due to the centrifugal force. It is written on the board. Careful with the spelling. Centrifugal. क्यों नहीं लिख रहा था? I'm also having a black belt. Centrifugal force. Hence, it is said to be. It is said to be. Same word again. We go oblate. Oblate. Spheroid. That's it. About the next heading, I'll just explain why I'm giving the question. Earth is
Oh my dear buddy, what is this right? अच्छा ठीक है. Second, तो लिखिए. Why the earth is said to be home of, किसी ने suddenly लिखा mankind. सर वो तो WWE होता है. Humankind. Now let us discuss this. Is the earth home? Yes, definitely. Correct? It is the home for human. Yes, definitely. Then is it the earth for home for dinosaur? No, sir. sir, it was. It was. आप किधर गए? अभी पिकनिक गए? Now then, why we are saying that earth is a home of humankind? देखो human भी लिखा है और kind भी लिखा है, but हम कुछ earth के साथ kindness दिखाते हैं क्या? One, last time only we have discussed, it has atmosphere. And the maximum gas, nitrogen. How much percent? 70. Sure, na? Oxygen is 21%. So 99 फिर 1%, सर वो हमारा फालतू गैस. LPG गैस, फिर मानक गैस. नहीं सर, वो गैस नहीं सर. आर्गन, रेटॉन, xenon, krypton, etc. उसके आगे भी मत पूछो. Then the oxygen gas, which is so important, is only 21%. Then what are we doing with nitrogen? मेरा तो कुछ काम का नहीं, आपसे तो ले लो. Nitrogen हाँ, nitrogen की वजह से these plants grow. And without plants, can you and me live? नहीं सर, मेरा बालकनी में तो एक भी प्लांट नहीं है, मैं तो जिंदा हूँ. और जो बचा मुझे था उठा के बाजू में नेकोर के साथ डाल. But you and me are consuming so many food items. नहीं सर, KFC है. कभी-कभी तो मैकडॉनल्ड्स से मंगाते हैं. But उसमें planned कुछ food नहीं होता इसका. And Bacha is right. When I am teaching source of water, Bacha ने लिखा watchman of building. मतलब how he is the source. खत्म होने के बाद हम उसको ऐसा दो गाली देते. And Bacha is absolutely right. मैंने बोला rainfall नहीं, rainfall नहीं है. उसका नाम रामपाल. Nobody is ready but make you to understand. Sir. And what security does it provide? दो है सर. एक सुबह को ड्यूटी करता है और एक शाम. Is earth is giving you security? Earth नहीं देता है. Watchman है. और हमने CCTV भी लगाया अभी. फिर भी होता है सर. साइकिल निकल गया किसी का. तो कैसे उस CCTV बंद था तो पास नहीं. So now you and me have to understand why we are saying it is the humankind. No other planet on the solar system you and me can live. मेरा माँ तो बोलता तो किधर भी जाके जी ले. तो तुरंत मैंने मम्मी को बोला चल टिकट कटा उनका. और पापा बोलते नहीं उतना पैसा नहीं है. सर मार्स नहीं सर मजा नहीं है. जुपिटर मुझे जाना ही नहीं है. प्लूटो नहीं वो तो खत्म ही हो गया. So why only here? Sir, it provides ideal condition. What does that word ideal means? So suitable. Suitable. What is that suitable, sir? अगर आप सूट नहीं करेंगे ना आप निकल जाओ. हाँ, definitely. हमको तो आप बार-बार क्लास से बाहर निकालते हैं. सारा बच्चा you get out of the class. लेकर कौन लेगा? वही तो चाहता खत्म हो गई. And I have seen many of the teachers in the schools. इधर एक दो आए. I don't know. I will throw you out of this window. Throw you out of this window. लड़का बोले इधर आप. ये window खोल. तो बाहर लगा है ना कैसे में जाएगा नीचे. चल लगा है. Next time I'll throw you out of the door. लड़का door से open कर दिया. मैडम बोलो हम निकलने के लिए रेडी. So this earth is the only planet which is throwing nobody out of this world. But हम throw करते सब. है ना? कभी कचरा उठा के है ना? कभी जंगल में आग लगा देता है. एंड बच्चा को तो फिर ब्लास्ट करता है डायनामाइट रख के बैंग. और तो बेचारी देखते रहते यार क्या क्या करता है. फिर सुबह उठते बोलता आई लव दिस अर्थ सेव द प्लैनेट. द डायनामाइट लगा जोर से. आई एम वेरी हैप्पी एंड पीसफुल विद दिस अर्थ. और दो लगा यार उधर. एंड फिर नीचे लिखा वी ऑल लव द. हो गया क्या? When I used to teach this deforestation, there was a person who has got a president award. Was वो नहीं रहे बेचारा. He observed human chain around the tree.
not to cut the trees. बेचारे 6-7 ह्यूमन बीइंग एक ट्री को ऐसा, you understand? हाँ, चिपको मशीनों से. अगर आज के जमाने में अगर मैं जाके चिपक के खड़ा है, पहला he is right. ये एसएससी टीचर मार पहले काट उसको. बहुत जबरदस्ती पढ़ता है. ये उसके पीछे मैथ्स टीचर भी है, उसको मत छोड़. उसको मत छोड़. ट्रिग्नोमेट्री का वही सब दर्द करता है. हाँ. इन सबके घर में फर्नीचर लकड़ी का ही होगा. हाँ, राइट, एब्सोल्युटली. तो वो ऐसा डायलॉग अमिताभ की तरह मारता है, तुझे ट्री को काटने से पहले मुझे काटना पड़ेगा पहले. आजा. अरे वो. So we always believe, despite all the trouble that you and me are giving to the earth, sir, मैंने तो कुछ नहीं किया सर. सिर्फ बुक्स ले आया. बुक्स बनता किधर है? आजकल शुगर केन बाग से इसे बनता है. You know what is बाग से? शुगर केन तो मालूम है? ये सर जूस तो पीता है, पर उसमें बाग से करके कभी नहीं निकला. अरे बाग से मतलब जो वेस्ट. अच्छा, वो जो रोड पे डालता रहता पब्लिक. हाँ, वही उससे बनता है आजकल पेपर. एंड पेपर का भी रिसाइकल होता है आजकल. हाँ सर, हर साल में उठा के रख दिया लेके जा. ए रिजल्ट अरे लेके अरे बिंदास. मानो बड़ा फेल हो गया. एंड भैया कल वो किलो का 10 रुपए लेके ना, बुक का 50 है. हाँ बोल ना. वैसे हर साल सिलेबस चेंज ही होता है, तो उसके तो हर साल रद्दी में लगता है क्या? So we always believe the earth is the planet which gives you all the ideal conditions to live, to survive, and जो इंडियंस बहुत आजकल लगातार कर रहे हैं, to multiply. चाइना को हम पीछे छोड़ दिए और इंडिया अभी भी लगा हुआ है सर. Don't worry sir. And what is the good thing about India? India is having the youngest population of the world. There is a very ittusa country called Japan. एवरेज एज ही उनका 29 और 35 है. उधर 14-15 साल के बच्चे बहुत कम है. बट इंडिया में हर टाइप के मिलेंगे. 60 का मेरा दादी स्ट्रॉन्ग चल रही है. कब से मैं सोच रहा हूँ 75 के बाजू में वो बैठे. कौन? अरे उनका हस्बैंड. अरे दादा को ना एक ही है. हाँ, कैसेट ना ऊपर का है ना नीचे का है, बट डायलॉग ऐसा मारता है ना. So earth is living you for years and maybe for years. So when I'm going to give you the answer, we have to explain why the earth is the home of humankind. Is it okay? Let us write 4 quick points. Earth is the only planet. Earth is the only planet of the entire solar system. Earth is the only planet of the entire solar system where life is possible easily. Where all are present today except your friend. Yes. Where life is possible easily. Second point. Ideal conditions. Like water. Water. Shall we say drinking water or throwing water? जरा एक ही होता है. A. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. O2. हाँ, O2. कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बट ठीक है, वो बाजू वाला को दे देंगे. ऑक्सीजन, सॉइल एंड ग्रीन प्लांट्स. Other such conditions which makes human life easy and comfortable. तो LG का AC पे लगाना बोलते हैं. Human life
easy and comfortable. Hence, next line. Hence में H E N C यहाँ सेम फॉर नहीं अभी बंद हो जाएगा. Hence डैश डालो और ब्रैकेट में क्या लिखने का? क्वेश्चन. मतलब वो क्वेश्चन रिपीटेड है. Is looking at me. फिर से क्यों क्वेश्चन लिख रहा है? आंसर तो करना. क्वेश्चन. हाँ, the question is to be repeated. And give you a small break of writing. Let us you guys check for your reading. मैं read करूँ पहले? नहीं ना? Now there is a last part of the chapter where I am going to explain why it is the home of humankind. देखो इधर तो लोग ने दिया distance from the sun, temperature. अभी वही points मैं आपको एक-एक line में दूंगा. Then we have atmosphere. Then we have biosphere. Then we have ecosystem. Then we have crust. And one more. So due to all this reason, the earth is the home of humankind. ठीक है? So I'll pass this book only. Other book also we will read. जैसे हम 10th में भी different books. Every lecture we will take one book. अभी जैसे अभी मैंने morning star लिया ना. Next time I'll take one more book. सबके साथ भेदभाव नहीं. सब हमारे ही भाई बहन हैं. ठीक है? चलो. So I am giving the book to him. It will go like this and come back to me from him. Okay? चलो. He is reading. Anyway, answer I am going to give. Let us check your reading. Distance from the sun. Read. डिस्टेंस फ्रॉम Sun. पूरा बुक में ढूंढ रहा है. रुक जा. जहाँ तक तो ढूंढ नहीं लेगा. the earth is at an optimum distance from the What is the other word for optimum? Correct. Neither too close nor too far. ideal. Perfect. Ideal distance. Correct. किधर है? it is neither too hot nor too cold. Which is very too hot Venus. and Mercury. Which is too cold? Neptune. Where is Pluto? out of the Out of the family. उसको पापा ने घर से लात मार के निकाल दिया. चलो. फेल हो गया. The distance between the earth and the sun makes life possible on the earth. देखो कितना अच्छा रीड कर रहा है. What is that life possible? हाँ सर ये टीचर जब खत्म हो गया ना हमारा life is possible. वरना impossible. हाँ देखो he is accepting to that. It's like he treats maths teacher as the best enemy. And geography and वो थोड़ा सा ऊपर है. वो कभी लिथोस्फीयर जाता है कभी बोलते क्रस्ट में आता है. कहाँ रहने का उसको खुद मालूम नहीं. And फिर हिंदी और ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं सर. I was explaining what Hindi do है. Somebody is from Kabir here. Anybody? In other branch. So there was a Hindi writer called Kabir, है ना? पढ़े आप लोग कबीर का क्या बोलते हैं? दोहे. और अभी तक मुझे दोहे समझ में नहीं आता क्या बोलता है. मुझे समझ में आया? कौन है? वो बेचारा ढूंढ रहा है कौन है. तो there was अच्छा she knows it. है आपके बिल्डिंग पे? अच्छा नहीं है. ढूंढ लिया. अभी एक ही स्लोगन है बार-बार हर टीचर आपको और मम्मी पापा भी बोलते हैं. काल करे सो आज कर. आज करे सो अब. हाँ पल में प्रलय हुएगी बहुड़ी करेगा कब. मतलब कल का काम आज करो और आज का काम अभी करो. तो बोले क्यों इतना जल्दी क्या है. अगर पल में प्रलय एक सेकंड में अगर दुनिया बर्बाद होने तो ना मुझे क्या. फिर बहुड़ी करेगा कब. बहुड़ी मतलब बचा हुआ काम. कबीर ने लिखा है इसको पकड़ो यार. अरे जब मुझे स्कूल में टीचर्स ने सिखाया मैं 2 दिन तक ये दोहे पे ही काम कर रहा था. नहीं सर बाद में देखेंगे सर इतना भी चलती नहीं. तो उसका बेटा एक था वो हमारे तरह सोचता था और उसने इसका ऑपोजिट दोहे लिखा. जरा किसी ने बोलो ऑपोजिट दोहे कैसा रहेगा. बोलो. आज करे सो काल कर काल करे सो परसों. इतना जल्दी क्या पड़ी है जीना है बहुत वर्षों. यही है सर यही फॉर्मूला. लास्ट ईयर से बोल रहा हूँ पास हो जाऊंगा अभी तक नहीं हुआ. नेक्स्ट ईयर नहीं सर फिर भी रहूंगा आपके साथ. टेंशन. और लाइफ बहुत बड़ा है सर. बहुत बड़ा. कितना बड़ा है वो नहीं बहुत बड़ा है. So when I said the life of the earth, I'll show you a typical video. It started at 8.5 billion years ago. Billion years ago. And now we are 230 million years ago. And abhi, so when that earth was there was a planet which infused itself into that earth. And उसने moon किधर है यार. उससे moon बच्चा पहले आएगा क्या डैड पहले आएगा.
गाड़ी बनानी है ना. And then the Earth's interior, जो core गर्म रहता है, it is made out of that only. There were many explosions and many. तुरंत बोला पाकिस्तान का स्टोरी सुबह को होता है, दोपहर को होता है और शाम को और एक भी होता है. एंड एक दिन सुबह फिर भी होता है, कभी नॉर्थ में होता है, कभी साउथ में, हाँ अलग अलग होता है. पर एक चीज अच्छा है सर, पाकिस्तान गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. आज भी वो कश्मीर का राग अलग तरह है, माशाअल्लाह. हम जिंदा रहेंगे तो तुरंत एक बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया है ना. तो मोदी जी अपने पसंद, भारत का 56 इंच रख दे. हम इधर 56 क्या, हम 56 से इधर 20 हो गया. एंड 20 से कभी भी 10, कभी भी तो अल्लाह ने इनको प्यारा, फिर भी ऊपर जाके बोलेंगे माशाअल्लाह. अरे हम तो लॉक कर ले, फिर भी नहीं सुनेंगे. So when I show you that video, ये होने के बाद जल्दी वीडियो दिखाता है, you will know how this earth has evolved. And कुछ जोग्राफर्स अभी भी लंबा लंबा छोड़ते रहते हैं, जैसे मैं फेंकता हूँ. सर अर्थ में अभी भी एवोल्यूशन चल रहा है, मतलब सर द कॉन्टिनेंट इज गोइंग टू कम नियर टू इंडिया. शायद आप लोगों ने भी न्यूज़ पढ़ा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड इंडिया इज गोइंग टू बिकम द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द. अच्छा स्वेटर ले ले यार, फिर महंगा. क्योंकि हमारे मम्मी है ना, शेयर मार्केट कितना ऊपर जाता है नीचे जाता है वो उनको टेंशन नहीं है. पहले टमाटर और बैंगन का भाव, टमाटर मत पूछो यार, हाँ गैस तो पूछो ही मत. पहले तो क्या नींबू. So we always believe the earth is going through big evolution. तो सर मेरा 9th and 10th में नहीं हुआ, छोड़ो सर. बाद में क्यों पढ़ना ही नहीं मेरी एवोल्यूशन हो या तेल हमको क्या है ना. तो I was giving some lectures to this NEET and JEE students. सर आप ज्योग्राफी पढ़ाते थे ना अभी, हाँ ठीक है सर. मैं क्यों ऐसा सोच रहा, नहीं आप वो अर्थ के बारे में जो स्टोरी बोला ना सर अभी याद आया मुझे. मैं क्यों घूम फिर के आप दोबारा मेरे सामने आ गए. रोटेशन हो रहा है, रोटेशन. So when we see the earth is not going big changes, but it is going a very slow change. The level of the water is rising. Everybody knows. तुरंत बोला अच्छा वोटिंग करने मिलेगा मेरे. तू डूब जाएगा. मैं स्कूबा डाइवर है, आप टेंशन मत लो, मतलब पूरा कॉन्टिनेंट डूब जाएगा. तो क्या मैं दूसरा कॉन्टिनेंट में जाऊंगा. So there is a big danger. They say the Everest and some part of the Himalayas where the ice starts melting. बोलने दो ना सर, मैं उधर नहीं रहता, मैं तो नेहरू सेक्टर जो ये उधर रहता हूँ. और पानी का लेवल बढ़ेगा. अच्छा हमारा टैंक हमेशा 24 घंटे में 4 दिन तक पानी देता है एंड 24 तास खाली रहता है. एंड जब भी बच्चा को बलून भरने का रहता है टैप ओपन करता है, हवा आता है. तो बाकी आएगा पानी आएगा. There is one politician, मतलब वन क्या जगह में नहीं, जिसने अभी नेहरू में आया और कैंपेनिंग किया. आप लोगों को बोला अगर मैच जीतेगा तो राम राज्य लाएगा. क्या बोला? राम राज्य. चल यार ये तो अपना दोस्त है. जैसे इलेक्ट हो गया पहले दिन बिजली बंद. ये क्या होगा? 2 दिन के बाद पानी भी बंद. तीसरा दिन मालूम पड़ा दूध वाला सब वाला बंद. तो लोग सब बोले उसको पकड़े उसको मार. इधर ये क्या राम राज्य. रुको मैंने करते भी क्या राम राज्य में पानी सप्लाई बिजली का दूध वाला दूध गाय के पीछे भाग. तो मेरे भाइयों और बहनों इसको मान गए ये बोल के हमसे वोट लिए. So whenever we are talking about the earth na, there are so many things which you are getting free of charge. नहीं सर पैसे देता हूँ बिजली का हर महीने, मतलब दूसरा दिन आके फ्यूज लेके निकल जाती है. बट ऑक्सीजन का वो तो मुझे मालूम ही नहीं कितना आता है. मीटर लगा होगा. इफ यू गो टू अ कंट्री कॉल्ड इजराइल, नहीं जाना. नहीं जाना. They have kept a meter. अच्छा गया ही नहीं तो फिर क्यों बोल. It measures the how much amount of water the soil needs. अच्छा मैंने टीचर को रखी 3 घंटा चिल्लाती है पानी नहीं पीती सर. तो उसका भी 1 मीटर लगा दो सर. ये देखो save water. that is what we are worried. India is the only country where we say drinking water. But you go to certain developed countries, say they have written safe drinking water. India में safe का मैं खुद ही नहीं है. Water कहाँ से safe?
है ना, सल्लू जैसे आदमी से पूछो पार्किंग कहाँ करते हो, फुटपाथ पे चढ़ के, है ना, 3-4 आदमी लोग अंदर घुस जाते हैं, वो चलेगा। बोलता हाँ अब मेरा गड्डी पार्क हो गया, बीच में 2-3 गए ऐसे छोटी, पिछला मन तो मैंने 6 दिन को मारेगा। This is what parking rules are. So we always believe that life is having a very beautiful gifts for you and me. चुपचाप रहो सर। कल मेरा हैप्पी बर्थडे था, सब केक का बट तो कौन सा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे क्यों नहीं, सर एक्चुअली दोस्त का बर्थडे था। आजकल था। So we said the life is very happy on the earth, but you and me are only making that life opposite of happy. चलो सेकंड पॉइंट वो रीड करेगा, I have to show you the video. हाँ ठीक है ठीक है, जैसा वो मैं वीडियो कर सर लेता ये हूँ दिखाओ सर टाइम का। अभी अभी, हाँ आई नो दैट वीडियोस में In the past few billion years, Earth has been pummeled by asteroids, crashed into other planets, and frozen over several times. Not to mention being ruled by all kinds of
डायग्राम्स क्या है वो सेकंड चैप्टर है ना अपना. So please get your pencil